Also, how do we draw? Actually, let's look at this question first. So the first three terms of GP are 1, 3 tan squared theta, and then we have 9 tan power 4. So find the value of theta for which this GP is sum to infinity. तो A is equal to क्या होता है 1 over sorry, sum to infinity is A over 1 minus R, where the modulo of R has to be smaller than 1. That is very important. ठीक है. So when do we apply this formula? When do we say कि sum to infinity होगा? When the modulo of R, the modulus of R is smaller than 1, right? That means कि R जो है that should be between what? It should be between -1 and 1, right? जब हमारी ratio let's say 0.4 है या 0.5 है, so every term keeps getting smaller and smaller and smaller until we can say that we converge to infinity, right? The sum converges in this case because every term is getting half or quarter and so on, right? तो इसके लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 tan theta, right? So first of all, let's see the tan theta की वैल्यू at 1 क्या होती है. So 3 tan theta is equal to 1. Theta is equal to basic angle find करेंगे इसके लिए, and the range of angles that are given is 0 से लेके π/2 तक, right? तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज 0 से π/2 हो सकती है, राइट? इफ यू ड्रॉ अवर क्वाड्रेंट तो ये जो है ये π/2 है, राइट? और ये जो है हमारी क्या है, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 and then you end up at 2π, right? Which becomes 0. अच्छा, so what does this mean कि 0 से π/2 मतलब theta can exist only in the first quadrant, ठीक है? So we know कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती है. all possible values of tan are positive, so we don't even need to work with -1 because -1 कहाँ पे आएगा, -1 की थीटा वैल्यू यहाँ पे कहीं आएगी, राइट? -1 की जो है थीटा वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, राइट? अगर -1 इसमें प्लग करें एंड यू नो इंटरप्रेट इट दैट वे. एनीवेज राइट नाउ तो हमने सिर्फ बेसिक एंगल फाइंड करना है. सो tan alpha is equal to 1/3. So what is the answer for this? So it's something 0.32 something radian, right? तो ये आपकी वैल्यू आएगी. This is your basic angle, right? Now this basic angle can exist where? It can also exist here and get a value of +1. +1 की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आ सकती है और इस क्वाड्रेंट में आ सकती है. जो हमारा बेसिक एंगल दिस और दिस इज 0.32, ठीक है? अच्छा, नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आएगी? नेगेटिव वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगी tan की, जब ये 0.32 हो और सेकंड क्वाड्रेंट में हो. सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है. However, your theta lies only between π/2 and 0, so we only consider the first quadrant जिसमें हमें एक ही बेसिक एंगल मिल रहा है, which is this, right? So as long as the value of theta is smaller than this, we should be fine, right? Let's see how a tan graph looks like. You can see this. So we need to have it smaller than right, so it has to be smaller than 1 and can be greater than -1, right? तो ये रीजन आता है. So you can see this 0 से लेके
π/4 तक आती है वैल्यू। But in our case it was क्या था 3 tan x, right? So ये 0.32175. So your theta has to be smaller than this number. तब जो है we can satisfy this condition GP की infinity sum वाली. Always use this condition जब भी आपने वो इस तरह के question solve करने होते हैं, ठीक है? So the inequality that you use would be this, right?